Good morning, students. How are you all? Today we are going to do continue of Unit 3 Citizenship. Every people living in India is not a citizen. As you can see that many people lives in India, but they do not have their any card because they can belong to another country. Out of these, most are Indians and most are foreigners. Many foreigners live here and they become citizen of India. Many people come to India from other countries and stay for some time and becomes temporarily stay. जैसे many countries में you can see that many people live for 5 years or 10 years, then they can also become a permanent there. They do not have the right to vote. They do not have any rights to vote there. Participate as a candidate in election. They do not have. They cannot participate in elections. Hold government post or enjoy other rights. They cannot get government job and cannot get other rights. Therefore, they are not called as an Indian citizen. They are not called as Indian citizen. They are citizen of their own country. People from Europe, USA, Russia, Japan, etc. came to India to study. These countries come here to study, to visit, or to work in various industrial sector. They come to work also. Ambassadors of different countries stay in India but are not Indian citizenship. यहाँ कई लोग रहते हैं पर यहाँ उसको सिटीजनशिप नहीं मिलती क्योंकि वो दूसरे कंट्री के होते हैं यहाँ, इसीलिए. Citizenship means to stay permanently in the country, to enjoy the rights given by the state and to perform the duties entrusted to a person. सिटीजनशिप क्या होती है? तो जो भी आप कंट्री में परमानेंट कंट्री में रहते हैं, जो वो राइट्स देते हैं वो आपको भी एंजॉय करना होता है. जो गवर्नमेंट जॉब मिलती है वो भी आपको मिल सकती है. वो कहते हैं, वो उसे क्या कहते हैं? सिटीजनशिप. A person gets or loses a citizenship according to the rules prescribed in the Constitution of India. आप lose भी कर सकते हैं citizenship because if you do any of the wrong thing, then you can lose the Constitution of the India, citizenship of the India. According to the Constitution, single citizenship is given by union government of all citizens of India, to all the citizens of India. हमें citizenship क्या से मिलती है? यूनियन गवर्नमेंट टू ऑल द सिटीजन. गवर्नमेंट आपको citizenship देती है. Citizens may belong to Gujarat or Maharashtra, but he is not entitled to get dual citizenship of the state and the union. आप जहाँ भी जो भी स्टेट में रहते हो तो वहाँ आपकी सिटीजनशिप अलग होगी. वहाँ आपको ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं मिलेगी. आपको महाराष्ट्र में भी रहना है, गुजरात में भी रहना है, तो आपको ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं मिल सकती. आपको कोई एक ही सिटीजन मिल सकती है. He gets only one citizenship and that is the citizenship of India. Any citizenship we do not get, but all the country has only one citizenship, like voter ID card. How to get an Indian citizenship? Now आपको कैसे Indian citizenship आप as you can know that many people come from different countries, then how they can get Indian citizenship? There are 4 ways of getting an Indian citizenship. There are only 4 ways to get: by a birth, by law, by registration, and by being a resident for a definite time period. कैसे आपको मिल सकती है?
तो आपको बॉर्न होना पड़ेगा वहाँ पे. बाय मैनी लॉज यू कैन पास फ्रॉम. बाय registration you can register to the Indian government, or by living permanent for many periods or for many years you can live here. A person who borns in India gets the Indian citizenship automatically. जब भी आप इंडिया में born होगे तो if you are from another country and if you come in India, then if you born any child, then he or she will get a Indian citizenship. A child who is born in a foreign country but has Indian parents has the right to Indian citizenship. आपके पेरेंट्स इंडियन है और आप बॉर्न हो गए आउटर कंट्री. इफ़ यू आर abroad born, then you can get an Indian citizenship because your parents are Indian. For example, Sri Sheikh and his wife are both Indians and are staying in the US. Nadeem, their son, is born. ये और उसकी वाइफ यूएस में रहते हैं, वो दोनों इंडियन है. पर नदीम his son was born in. Sri Sheikh registered the name of Nadeem in the office of Indian ambassador. जब भी नदीम बॉर्न हुआ तो उन्होंने क्या किया, इंडियन ऑफिस में रजिस्टर करवाया उसका नाम. Thus Nadeem get the citizenship of a true country. उसको क्या मिली, 2 कंट्री की सिटीजनशिप मिली. यूएस की जहाँ पे वो बॉर्न हुआ, और उन्होंने इंडियन एम्बेसडर में बॉर्न रजिस्टर किया, इसलिए उनको 2 कंट्रीज़ की मिली. पता चला ना आपको स्टूडेंट्स कैसे मिलती है दो कंट्रीज़ की सिटीजनशिप. यूएस एंड इंडिया बोथ ही गॉट, as you can see here, in US and India. However, when Nadeem became an adult, he has the citizenship of any one country of his choice. Nadeem को जहाँ भी रहना है वो वहाँ रह सकता है. Whether he can live in US or India, whatever choice he has, he can live there. Being born to Indian parents is a very natural way of acquiring Indian citizenship. आप जब born होगे Indian parents से, तो it is very easy to become an Indian citizenship. Even foreigners can acquire Indian citizenship by applying to the government of India after a very long stay. Foreigners यहाँ पे आ सकते हैं, और जो वो लॉन्ग पीरियड से रहने के बाद वो अप्लाई कर सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में. However, there are some conditions. उसमें भी many conditions होते हैं. Few are given here. To surrender the citizenship of the foreign countries at the time of application, जो भी आप फॉरेनर हो और आपको सिटीजनशिप चाहिए, तो आपको एप्लीकेशन देनी होगी टाइम पे. ही शुड बी अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर 5 years, मोर देन 5 years के लिए वो इंडिया में रहना चाहिए. द इंटेंशन ऑफ द एप्लीकेंट मस्ट बी वन ऑफ द परमानेंट रेसिडेंट. सी, जो भी इंटेंस उसका क्या होता है एप्लीकेंट के लिए, वो परमानेंट सिटीजनशिप मिलने लगेगा. However, if a foreigner marries an Indian citizen, he or she then becomes an Indian citizenship. वो जैसे आप पता चलेगा कि जो भी फॉरेनर होंगे वो उनको इंडियन सिटीजनशिप मिलेगी. If an Indian citizen commits the serious crime of a battalion, then he loses the citizenship of India. जो भी वो he goes in any wrong direction and do any crime, then he can lose the citizenship. Rahul said, Dadaji,
I had got a lots of information about the citizen and citizenship from you, which I will pass on to all my फ्रेंड्स. आपको भी ये करना चाहिए कि कैसे आपकी सिटीजनशिप है. वो जैसे आप यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि कैसे ही सिटीजनशिप मिलती है, कैसे हमें रहना चाहिए. वो कैसे आई हैव गॉट हियर, आई हैव गिवन लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन हियर. यू कैन ऑल्सो पास टू योर फ्रेंड्स. जैसे सिटीजनशिप मिलती है. हाउ इज़ द सिटीजनशिप ऑल यू कैन पास टू योर फ्रेंड्स. जैसे यहाँ राहुल ने किया. नाउ एक्सरसाइज वी विल राइट डाउन इन आवर नोटबुक that I will send you further. Thank you.